Dear students, our next topic is velocity time graph. Velocity time graph is the relation between velocity and time graphically, means how the velocity changes with the time. I will explain it with the help of graph. In this case, we can take velocity as well as speed. Why we are taking both of this? Because here we are considering object is moving in a straight line and there is no change in direction. If there is no change in direction, then velocity and speed are same, and hence distance and displacement are also same. So we can draw here velocity time graph or speed time graph. Both are same. Now I will teach you one by one. Number one, when the velocity or the speed of the object is constant. Constant means same रहेगी. Means first when speed constant. Number two, when speed increases uniformly or uniform accelerated motion. Number three, when speed decreases uniformly. And number four, non-uniform speed. Now students, I will teach you one by one. Number one, when speed constant. बेटा कांस्टेंट स्पीड के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ है. वाई एक्सिस में वेलोसिटी, एक्स एक्सिस में टाइम. अब देखो इन्होंने कहा है स्पीड कांस्टेंट मींस अगर कोई गाड़ी चल रही है और उसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है तो वो 60 ही रहेगी, चेंज नहीं होगी. यूनिफॉर्म स्पीड या कांस्टेंट स्पीड का मतलब यही होता है कि उसकी स्पीड सेम रहेगी. आप देखो सपोज इधर टाइम है 1 2 3 4 मीन्स सेकेंड्स में अगर हम टाइम लें और दिस वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में लें. सपोज किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, तो उसकी स्पीड और वेलोसिटी सेम रहेगी. मीन्स वो 20 की ही स्पीड से चलता रहेगा. 4 सेकेंड के बाद भी उसकी होगी सेम स्पीड रहेगी या सेम वेलोसिटी रहेगी जो कि 20 मीटर पर सेकेंड है. सो ये ग्राफ क्या है? इट इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस. मीन्स velocity time graph for the object having constant speed or constant velocity or moving with uniform speed is a straight line parallel to time axis. Now students, ये ग्राफ किस काम आता है? Use of this graph. This graph is used to find out the velocity at any instant. Number one, to find out velocity or speed at an instant. Number two, it is used to calculate the distance covered in a given period of time. Means distance निकालने के लिए और displacement. Number three, it is also used to calculate acceleration. Now from here, velocity आप क्या बताओगे? 1 सेकेंड के बाद भी 20 मीटर पर सेकेंड है, 2 के बाद भी 20 मीटर, किसी भी समय लोगे एट एनी टाइम द वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकेंड. नाउ हाउ विल यू कैलकुलेट डिस्टेंस फ्रॉम दिस ग्राफ? लुक हियर बेटा, वी नो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस
अपॉन टाइम और डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब अगर आपको कैलकुलेट करना है इस वाले ग्राफ से, आपको अगर डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी स्पीड यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखते हो तो 20 है और किसी टाइम के बीच में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। सपोज मैं इधर से ही लिखती हूँ, तो इधर का सपोज मैं 2 और 4 सेकेंड के बीच में इसका डिस्टेंस कवर निकालना चाहती हूँ, तो कैसे निकलेगा वो देखो। डिस्टेंस इक्वल टू इसकी स्पीड कितनी है, इसको निकालने के लिए स्पीड इनटू टाइम। तो इसकी स्पीड कितनी है 20 इनटू टाइम कितना हो गया 4 माइनस 2 मीन्स 2 सेकेंड्स का टाइम हो गया, इनटू 2 मीन्स 40 मीटर। इट मीन्स हमारे ऑब्जेक्ट ने 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलते हुए 2 to 4 सेकेंड मीन्स 2 सेकेंड्स के अंदर डिस्टेंस कवर कितना है 40 मीटर। So what is distance? Distance is area. This is area, means if we consider this as breadth and this as length, then length into breadth or breadth into length is area. Area under velocity time graph। मीन्स डिस्टेंस निकालने के लिए अगर आपको ग्राफिकली डिस्टेंस निकालना है तो यू हैव टू कैलकुलेट एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसका फॉर्मूला भी आप लिख सकते हो। सपोज ये v वेलोसिटी है और ये टाइम t1 है एंड दिस टाइम इज t2, सो इट इज इक्वल टू वेलोसिटी v इनटू टाइम t2 माइनस t1। नाउ थर्ड वन इज एक्सेलरेशन। How to calculate acceleration from this graph? Now we know acceleration equal to v2 minus v1 upon t2 minus t1, means change in velocity upon time taken. Now if we consider this as v1 and this as v2, look here, v1 and v2 are same, both are 20, so v2 minus v1, that is 20 minus 20, that is 0, upon t2 minus t1 means 4 minus 2, that is 2, this is equal to 0। acceleration meter per second square। it means if the body is moving with constant speed, it is not accelerated। अगर बॉडी कांस्टेंट स्पीड से चल रही है तो उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है। सो दिस वाज वेलोसिटी टाइम ग्राफ व्हेन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट।